Hello everyone, welcome back to my channel. Today I have with me a very special guest, Pavani, who in next 5.5 years is going to become a doctor because she has cleared NEET UG 2022 with a stellar performance. She has scored 700 marks out of 720 and has secured an All India rank 78. Congratulations, Pavani. Thank you, sir. Thank you so much. And this is probably my first interview that I'm doing for NEET UG per se. I usually do NEET PG interviews, but I thought that since a lot of my audience is NEET UG as well, they would benefit and they would enjoy this interview. Interview which is not a coaching interview. कोई coaching नहीं लेगी, कोई Alan Akash नहीं लेगा, ठीक है, कोई physics वाला नहीं लेगा, कोई Unacademy नहीं लेगा. This will be an honest talk between two people about her journey and how she cracked this exam or and her past 2 years journey and how things have not really changed 2012 ho ya usse pehle ho ya 2022 ho. And so I'll first begin. I'll ask the very first question, something which is I hope that this from All India rank 78 at least allays the fear of most aspirants. यार बायो में एनसीईआरटी के अलावा कुछ आता है? सर कुछ भी नहीं, मतलब आप उससे assertion reason देख लो, आप उससे statement based questions देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए. There was nothing out of NCERT, absolutely nothing. So for biology, what will you advise to the NEET aspirants? Say stick to those two books, those 11th and 12th standard books that you have. They are more than enough to crack. Exactly, they are more than enough to crack NEET to crack your bio. Yeah. So मैं तो हो गया, मैं थोड़ा बुढ़ा हो गया हूँ, तो शायद अगर मेरी बात में विश्वास नहीं आ रहा हो, ठीक है, कि एनसीईआरटी से पेपर आता है, तो आई होप दैट हर वॉइस ब्रिंग्स दिस चेंज कि एनसीईआरटी ही पढ़नी है, फोकस जस्ट ऑन एनसीईआरटी द एंटायर पेपर. I would say, sir, कि इस बार का जो bio paper था, it was a little tricky, a little confusing. So what I want to put forth is कि सिर्फ NCERT के basis पे भी there can be tricky questions, there can be tough questions. So instead of going for out of NCERT things and very difficult things, stick to NCERT. जो NCERT है उसे clear करो, so that जो भी confusing questions हैं, you can somehow get to the answer during the exam. This time actually the paper they made sure it was their way of saying कि तुम्हें क्या लगता है हम NCERT से tough paper नहीं बना सकते. Exactly, absolutely. मतलब I can't agree more. वो वैसा ही था. है ना? So that's the thing. Don't underestimate NCERT. True. है ना? कि ये 2 books हैं, ये तो क्या है, इससे थोड़ी ना निकलेगा, हमें तो बड़े-बड़े मॉड्यूल्स पढ़ने हैं. ऐसा मत करो, इन 2 books से भी टफ पेपर बन सकता है. बिल्कुल. So the next question I'll ask you, Paavni, is that so चलो NCERT पढ़ना है ना, ये काफी लोगों को पता है आज की डेट में. You knew about this, I'm pretty sure. I hope you knew about it. Yeah. ठीक है. तो but you got 350 out of 360. One was an assertion mistake. One was a bonus question जो मिलना चाहिए था तुम्हें. But there will be someone जिसने NCERT पढ़ी होगी, उसके 300 नंबर आए होंगे, किसी ने पढ़ी होगी उसके 320 आए होंगे, किसी ने पढ़ी होगी उसके 200 हो सकता है 200 या 250 के आए हों. What was that? What was the thing that you think made the difference in you getting 350 while reading just NCERT? Paper say this of NCERT, but how was your approach to bio NCERT that you were able to score this high marks, 350, or let's say अगर bonus मिल जाता तो 355? Yeah. So, sir, I feel there are a couple of factors in this. So one of the factors could be कि exam time पे अगर आप calm नहीं हो, composed नहीं हो, तो हड़बड़ी में आके you can go wrong. तो एक उधर हो सकता है. दूसरा, there can be silly mistakes. So उसमें you have to be more vigilant sort of, और थोड़ा और confidence होना चाहिए and देखना चाहिए. You should be careful while doing the questions. And the third one could be conceptual mistake. So what I feel is some people say ना कि bio में रटना पड़ता है. So I feel कि it's not just रटना. There are concepts in bio as well. There are things you have to understand. I mean, the human body is a complex machine. You can't just उसे रट्टा नहीं मार सकते हो आप. आपको समझना पड़ेगा उसको. तो what I used to do was कि जब मैं lecture देखती थी and I used to understand whatever was being taught अच्छे से, and मैं अपने दिमाग में एक image बना लेती थी कि okay, so this is how it works, this is the thing, this is the main concept. And एक बार वो image बन गई, उसके बाद I used to read NCERT. So then मेरे मन में एक visual भी था वो image का और एक audio भी, because I used to keep saying the sentences again and again. So that is how
हाँ, so that is how I used to make sure कि एक audio visual learning हो रही है मेरी, तो and concepts पूरे clear रहते थे. So एक I would say कि focus on the concepts. And another thing I used to do was bio was my favorite subject. So what I used to do was, out of interest, I used to go on YouTube and I used to watch videos related to any particular topic. So that way, those things help me to, visualize the thing in a better way, especially with things like human physiology. So I have watched dissection videos and everything on YouTube, and I have to say कि वो जो structure है, जो चीज है, उसको visualize करने में बहुत help हुई है मेरे को. So I would say कि आया होगा, हाँ, मजा भी आया होगा. मजा भी बहुत आया, इंटरेस्ट पहले से ही था, एंड देन जस्ट टू लुक एट इट, इट वाज वेरी वेरी फैसिनेटिंग. सो आई वुड से कि बायो को बस रट्टा मारने के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखो, एंड अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड द ट्रू ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट. That is, I feel it makes a difference, because if you are just doing the subject for, मेरे को marks लाने हैं इसलिए करना पड़ेगा, तो then you won't do it with all your heart. And if you do it with all your heart, you will be able to score better, I feel. So Pavni is basically saying कि बायो को सिर्फ ऐसे मत करो कि अच्छा ये 2 बुक्स हैं, इनको मेरे को रटना है, तो रट नहीं पाओगे, और रट भी लोगे तब भी नंबर नहीं आ पाएंगे. Rather feel the subject. Exactly, feel the subject, enjoy the subject. Enjoy the subject. So you would probably be like, let's say कि अगर तुमने molecular basis of inheritance किया, so you would have an image कि अच्छा ये DNA ऐसे है, तो ये से जब ट्रांसक्राइब होगा, ये ट्रांसलेट होगा, तो RNA ऐसे बनेगा, और अगर RNA से प्रोटीन बन रहा है तो ऐसे बनेगा. You would have an image in front of you. Those proteins, those amino acids probably would be dancing in front of you in some way or the other, है ना? So the thing is कि as you move through the course, you understand कि okay, this particular chapter I need to pay special attention to it. Like for me it was for me it was plant anatomy. Then there was, yes, molecular basis of inheritance did take time, it was a long chapter. And ऐसे करके थोड़े थोड़े chapters थे जिसमें मेरे को थोड़ा extra effort देना पड़ता था. So then that time, yes, the key was repeated revision, going over the NCERT again and again. Okay, so we have learned 2 things right now, that bio, if you want to score 360 on 360, or definitely more than 350 plus, then the key obviously is NCERT. At the same point of time, don't think of it as कि अच्छा मेरे को सिर्फ बुक को रट्टा मारना है and रट्टा मार लूंगा नंबर आ जाएंगे. नहीं, if you want to score better, then bio also has a lot of concepts. उन concepts को visualize करो, make it interesting, try to make it interesting, and जब interesting बनाओगे तो अपने आप score improve कर जाएगा. Well, I'll move on to the other subjects, physics and chemistry, which was, so bio you said was a favorite subject. किस सब्जेक्ट में पसंद, कौन सा सब्जेक्ट पसंद नहीं था? Physics. Okay, चलो, हर नीट एस्पिरेंट की दुखती रग पे तुमने अभी के अभी बॉम्ब फोड़ दिया कि तुम्हें फिजिक्स नहीं चलो, वेरी गुड. तो फिजिक्स पसंद नहीं था, बट तुम्हारे फुल मार्क्स आए हैं फिजिक्स में. जी सर. ये अजूबा फिर कैसे किया फिजिक्स ना पसंद करके? तो सर सीन ऐसा था कि फिजिक्स में मेरे मार्क्स कम आते थे, इंटरेस्ट कम था, एंड वो मैं बस करने के लिए करती थी कि हाँ नीट देनी है, फिजिक्स करना पड़ेगा. एंड सो देयर वाज अ पॉइंट व्हेन मतलब बहुत कम मार्क्स आए थे मेरे एक पर्टिकुलर टेस्ट में, एंड आई वाज वेरी वेरी लो, एंड आई थॉट यार अब तो साइंस होगा नहीं. बट देन I came back, I talked to my parents, and then we kind of sat together and built a strategy. And I decided कि every day 2 hours I will practice physics every day. And I decided no matter what, 3-4 months I will practice physics daily for 2 hours minimum. If I want, I can extend it. And slowly and steadily मेरा physics में interest बढ़ने लगा. And जैसे जैसे physics में interest बढ़ा, I felt like doing the subject more. So I could see physics around me. So then जैसे ही वो हुआ, the dynamics changed. And I started enjoying physics. फिर मेरे physics में marks अपने आप बढ़ गए because I used to practice more. So what was happening was I was running away from physics initially. And then I finally came and made physics my friend. So that's how from being low in physics, I went to 180 in physics. 180. Practice. So basically, for every NEET aspirant, you will say कि physics से दौड़ो मत, उसको अपना दोस्त बनाओ, practice करो. Like you practice daily 2 hours. Like I really commend that. कि in fact, this is pretty much if anyone asks me my advice on physics also, I'll say this only. कि practice करके तो देखो, and एक बार ना question solve होने लग जाता है तो मजा भी आने लग जाता है.
मतलब उसमें टाइम जरूर लगेगा. आई वोंट से इट विल बी एन इमीडिएट प्रोसेस कि आपको इमीडिएटली फिजिक्स पसंद आने लगेगा, ऐसा नहीं होता. आपको एक हफ्ता फिजिक्स का हैंग आने में लगेगा, दूसरे हफ्ते से आपको धीरे धीरे चीजें समझेंगे, यू विल बी एबल टू थिंक ऑफ द प्रॉब्लम सिनारियो, एंड थर्ड फोर्थ वीक से मे बी यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट. It will take time, but what you need to do is give it that time. You can't just be impatient with it. नहीं तो नहीं होएगा. चलो. So basically now we have covered two subjects. Biology NCERT करनी है. Physics में it is P for physics, P for practice. जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना फिजिक्स को अपना अच्छा दोस्त बनाओगे, धीरे धीरे फिजिक्स भी अच्छी लगने लग जाएगी, एंड देन यू वुड बी एबल टू स्कोर 180 on 180 जस्ट लाइक पावनी डिड. सो आई वोंट गो टू केमिस्ट्री के साथ लोगों की केमिस्ट्री जैसे भी हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता. आई वुड रादर आस्क यू समथिंग कि व्हेन डिड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन? डिड यू स्टार्ट इन 11th और 12th, और डिड यू स्टार्टेड इन 9th और 10th, या फिर जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है एट द पॉइंट ऑफ स्पर्मिएशन इटसेल्फ तुमने स्टार्ट कर दिया था, या फिर आई थिंक ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था इस बार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्पर्मिएशन के ऊपर वाला. Yes, yes. It was a controversial question. The NCERT से जाए तो अलग आंसर है, लॉजिकली जाए तो अलग है, तो कुछ और ऐसा आ रहा है. तो कब शुरू किया था? स्पर्म से शुरू किया था, फर्स्ट क्लास से शुरू किया था, 10th से शुरू किया था, 9th से किया था, या कब शुरू किया था प्रिपरेशन? सर मैंने तो 11 12 से शुरू किया था, 9th 10th में कुछ नहीं किया. में निकल गया नहीं. चलो. So this is one thing I actually want to emphasize every NEET aspirant also, that there's like मतलब ठीक है, it's fine if you want to join the foundation course, but it's not necessary. Don't think कि NEET is a 4-year journey या 5 साल की journey है. If you're dedicated enough in your 11th and 12th standard, निकल जाता है, right? निकल जाता है. So in these 2 years, what was the toughest phase like you faced? कुछ तो हुआ होगा, ये एकदम स्मूथ जर्नी थी, पढ़ते गए, एग्जाम निकलता गया, नीट भी निकल गया. सर स्मूथ तो कुछ नहीं था, स्मूथ तो कुछ भी नहीं था. एंड दिस इज वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल द एस्पिरेंट्स कि तुम्हारी जर्नी, इफ यू थिंक इट्स गोइंग टू बी स्मूथ, देन यू आर मिस्टेकन. उसमें अप्स एंड डाउन्स होंगे, बट व्हाट यू नीड टू डू इज कम आउट ऑफ दोज थिंग्स, दोज लो पॉइंट्स ऑफ योर लाइफ. एंड इनफैक्ट मेरे साथ ऐसा एक सीन था कि जस्ट 2-3 months बिफोर नीट मेरी पढ़ाई जो थी वो बहुत नहीं हो रही थी, ऑलमोस्ट एफिशिएंसी बहुत कम हो गई थी, बिकॉज 2 odd years आई वाज इन माय हाउस, इन माय रूम, अकेले बैठ के पढ़ रही थी. सो देन बहुत ऐसे मोनोटोनस सा हो गया था टुवर्ड्स द एंड, एंड मैं बोर हो गई थी सेम चीज रिवाइज करके. So then I decided I'll, instead of doing 1 subject per day, I'll do 2 subjects per day. I went to my coaching class and sat there and studied, क्योंकि वो ऑफलाइन शुरू हो गया था तब. मोनोटनी थोड़ा ब्रेक करने के लिए, यहाँ नहीं पढ़ा वहाँ. हाँ, मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए. प्लस क्लास में ऐसे और भी लोग पढ़ते थे, तो उन्हें देख के और ऐसे फीलिंग आती थी कि इफ दे आर स्टडिंग, आई शुड ऑल्सो बी स्टडिंग राइट नाउ. तो एक वो फैक्टर था. सो दैट वाज अ वेरी लो पॉइंट फॉर मी, बिकॉज it was just 2 or 3 months before NEET. And मैंने जब भी सुना था तो लोग ऐसा, मतलब you would expect someone to say ना कि हाँ मेरी NEET पास में आती जा रही है तो मेरी प्रिपरेशन एकदम सही चल रही होगी, चल रही है, एकदम मस्त चल रही है. हाँ, बट मेरा पूरा ऑपोजिट था. मेरी बहुत ही अजीब सी प्रिपरेशन चल रही थी उस समय. सो एक मेंटली आई वाजंट इन अ वेरी गुड प्लेस. आई वाज अ लिटिल स्कैर्ड कि मे बी इसके कारण ऐसा ना हो कि मैं पीछे रह जाऊं या कुछ. सो दैट वाज अ प्रीटी लो पॉइंट फॉर मी. ठीक है, साइनोसॉइडल तो होती है लाइफ, कभी डेफिनेटली. मतलब अगर आप मैक्सिमा पे हो तो आप मिनिमा पे आओगे ही, और मिनिमा पे हो तो मैक्सिमा पे आओगे ही. ठीक है. सो फिजिक्स कर लिया हम लोगों ने, बायो कर लिया, केमिस्ट्री का व्हाटएवर इट इज, दैट्स परफेक्टली फाइन. डिड यू जॉइन एनी कोचिंग? यस आई डिड सर, पुणे में. नेसेसरी टू जॉइन कोचिंग, और कोचिंग इज लाइक इट्स अ वेरी हेल्पफुल रिसोर्स, बट एंड में अपने एफर्ट ज्यादा मैटर करते हैं? I would say coaching is like a catalyst. Okay. So they will help you end में, but आपकी self study, your effort is what matters. See, the coaching will give you resources, but how to use those resources is up to you. I mean, I could just study from those resources and crack it, or not study from those resources also and crack it. It is up to me. So I would say coaching is a catalyst which will help you, but आपका effort is very very necessary. You can't expect कि सिर्फ coaching के बल पे मैं निकाल लूंगी. You will have to put in that effort from your own side. Okay, so basically what you're saying is कि coaching helps करती है, but ऐसा मत समझो कि मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली तो मेरा एग्जाम निकल जाएगा. जी बिल्कुल, है ना.
एंड में खुद एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे, एंड इट्स योर सेल्फ एफर्ट्स व्हिच विल काउंट टुवर्ड्स यू गेटिंग अ गुड रैंक, अ गुड स्कोर, और व्हाटएवर यू डिजायर बेसिकली, राइट? सो चलो, काफी मस्त मस्त चीजें हुई। मुझे ये बताओ कि व्हाट वाज द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग दिस 2 ईयर जर्नी? लोएस्ट तो बता दिया, कब लगा कि यार मैं तो साथ में आसमान पे पक्का निकलेगा नीट मेरा, देखना? हाईएस्ट पॉइंट वुड बी मेरा केवीपीवाई का रिजल्ट आया था, Okay. and KVPY में I had secured an all India rank 156. Okay. So KVPY नीट के कंपैरिजन में एक टफर एग्जाम है, क्योंकि उसका लेवल थोड़ा हाई है. So that time I was like, if I can crack KVPY with a good rank, then I can definitely crack NEET. And तब मेरे को confidence आया खुद में कि I have what it takes and I can really do it. So that was a very nice, it was a high point in my life, I would say. चलो, congratulations. What was your exam day strategy? कि इस दिन एग्जाम के दिन क्या सोच के गए थे? एग्जाम से पहले कितना घंटे पढ़े थे, कितने घंटे सोए थे? एग्जाम के दिन स्ट्रेस कैसे मैनेज किया? बिकॉज लाइक यू सेड कि हो सकता है कि एग्जाम के स्ट्रेस की वजह से किसी के बायो में कम नंबर आ रहे हो, तो वो मैनेज कैसे किया या मैनेज नहीं किया? तो व्हाट वुड बी योर टिप एंड ट्रिक टू टेल समवन कि लोड लेना है या नहीं लेना है, और अगर लेना है तो कितना लेना है, और नहीं लेना तो कितना नहीं लेना है, व्हाटएवर इट इज व्हाट यू वांट टू टेल द एस्पिरेंट्स? So exam day strategy was कि day of the exam I am not going to touch any book, no book. And सही बताओ तो इस चीज के लिए मैंने पहले से ही तैयारी थोड़ी शुरू कर दी थी. So when we used to have these mock tests, that particular day I would not study much, so that end of the year, like end of the course, NEET के समय when I actually have to implement that कि exam day पे नहीं पढ़ना है, I am comfortable with it. And NEET वाले दिन मैंने proper sleep ली, 8 to 9 hours की sleep ली मैंने. And then I listened to songs and I talked to my parents about non-academic stuff. And मैंने बहुत ऐसे एकदम chill way में गई थी. And what I thought was कि I have given so many mock tests अभी तक, and this is just another mock test, and this is the last mock test I have to give. So I have to consider it as a mock test. लोग मेरे पास आसपास अलग रहेंगे, but doesn't matter. What matters is कि मेरे पास मेरा पेपर है और मेरा पेन है, and बस उसी को मेरे को ध्यान रखना है. Yes, it is difficult जब आप उधर अंदर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, waiting for the paper, doing nothing, just staring at the invigilator. It is difficult and it is natural कि आपके मन में thoughts आएंगे काफी सारे. But that time I just closed my eyes and just sat and thought कि what if this, what if everything goes well, and then उसके बाद का क्या होगा? And then that thing really helped me because I thought अब सब अच्छा जाएगा तो उसके बाद की भी चीजें अच्छी होंगी, एंड सब अच्छा जाने के लिए मेरे को पेपर अच्छे से देना है. सो दैट वाज द की पॉइंट फॉर मी कि अगर मैंने पेपर अच्छे से दिया तो बढ़िया हो जाएगा सब. तो आई वुड से कि लास्ट डे पे पढ़ाई अवॉइड करो, क्योंकि क्या होता है समटाइम्स एक का कोई पॉइंट बाय मिस्टेक भूल गए आप या एकदम से याद नहीं आया, सो इट ब्रिंग्स योर मोरल डाउन. It really pulls you down. So instead, whatever you have learned, whatever you have done for the past 2 years, usme have faith, believe in yourself, you will remember that. That is the thing. आखिरी दिन के दिन ज्यादा लोड मत लो, पढ़ाई कम करो, क्योंकि पढ़ोगे तो लगेगा कि कुछ ये शायद भूल गया हूं मैं, तो उससे एंजाइटी बढ़ेगी. एग्जाम को जस्ट गिव मेनी मॉक्स, गिव सो मेनी मॉक्स कि एग्जाम के दिन जब देने जाओ तो लगे कि एक अलग मॉक टेस्ट ही है जिसको मेरे को देना है, और फिर आगे बढ़ना है लाइफ में, है ना? है ना? So, वो चीज हो जाती है. सो थोड़ा एक रैपिड फायर कर लें थोड़ा बहुत? ओके. ठीक है, चलो. बॉयफ्रेंड है? नो. ओके. बनाना है? अभी तो कुछ प्लान नहीं है. नो प्लान नहीं है. ठीक है. फेवरेट सुपरस्टार? फेवरेट सुपरस्टार वुड बी आयुष्मान खुराना. ओके. फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवीज जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. फेवरेट फूड? Too many things. पनीर. चलो, पनीर. ठीक है, पनीर is favorite food. Fair point. चलो. And what was the first thing that you did just after hearing your result? Just after hearing my result, so रात का समय था. So then I was jumping. I went to my parents' room, woke them up, and I said कि within 100 rank आ गई है, and I was really happy. So this was it from my side, and this was it from Pavni's side. Hope you guys enjoyed the interview, and hope you guys learned something.
from the interview that 2 साल काफी हैं, sperm के time से preparation की जरूरत नहीं है. You know, it's going to be a sinusoidal wave. Life is going to be tough. Life is going to be easy. So take it in its stride and बस अपनी ओर से मेहनत करते रहो. बायो में NCERT के ऊपर फोकस करो, फिजिक्स में प्रैक्टिस करो, मेक फिजिक्स योर फ्रेंड, एंड टुवर्ड्स द एंड हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि चीजें याद रहेंगी और एग्जाम एकदम एक अलग मॉक की तरह देकर आ जाओ एंड विल कम आउट ऑन टॉप, राइट? एनीथिंग एल्स यू वांट टू से, पावनी? Another, just one last thing I would say is कि breaks लेते रहो. ऐसे नहीं कि you are studying for 16-17 hours continuously. What matters in the end is कि how much you are studying in the quality of your study more than the quantity. And so I would say कि whenever you're feeling low or when you don't feel like studying, it's okay to take a break. It's absolutely okay, but do not make excuses to take a break. Breaks के ऊपर breaks होनी चाहिए. Yeah, so usme you can indulge in your hobbies, do what you like, but it is absolutely fine to take a break. So ensure that you don't burn out. 2 साल बहुत लंबा टाइम होता है, and it's fine if you take a break. Do whatever, hobby है, music सुनना है, girlfriend से बात करना है, boyfriend से बात करना है अगर है तो, but ensure कि you take a break, but don't be in an excuse to take a break. Excuse में नहीं रहो कि मेरे को गर्लफ्रेंड से बात करनी है फिर एग्जाम में निकलेगा, बट ब्रेक ले रहे हो तो कर सकते हो, राइट? True. So thanks a lot, Paavni, and hopefully people would have enjoyed this interview. People would have learned something from this interview, and hopefully this is not like a coaching interview जिसमें लोग सिर्फ अपनी कोचिंग की तारीफ करते रहते हैं. This is an actual interview where people are talking real stuff. Hopefully I'll bring out more such interviews with more such top rankers, and thank you once again. Thank you for agreeing for this. Thank you. Congratulations. Thank you so much, sir. It's an honor to be here. Thank you, and bye bye. Sayonara. Bye.